Hello, literature lovers. Welcome to LITTWIT CLUB. Hope you all are doing great. And today we will going to discuss another poem of John Keats, which is Ode to Autumn. This poem is written by John Keats, written in 1819, जो कि लगभग इनके जो फेमस ओड्स हैं वो इसी ईयर में लिखे जाते हैं। इन रेगुलर ओड है, 3 स्टेंजाज हैं, हर एक स्टेंजा 11 लाइन्स की है। उसका राइम स्कीम देख सकते हो, ए बी सी डी ई सी डी ई। ओके, iambic पेंटामीटर में लिखा हुआ है। ओवरव्यू देख लेते हैं। कीट्स ओड टू ऑटम इज अ serene and richly descriptive celebration of season of harvest and transition. So ode to autumn, autumn बेसिकली एक ऐसा सीजन होता है जिसमें हर एक चीज अपने एकदम मैच्योरिटी पे होती है। हाँ, रिपनेस होता है, फुलफिलमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको ऑटम सीजन में देखने को मिलता है। इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज द मोस्ट मैच्योर ओड। ये इनका सबसे मैच्योर ओड, जैसे कि ओड टू ऑटम और ओड टू नाइटिंगेल को माना जाता है। दोनों ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। showing a calm acceptance of natural cycle of growth, fulfillment and decline. तो हर एक चीज का एक बिगिनिंग होता है, एक मिडिल होता है और एक एंड होता है। तो उस चीज वो एक साइकिल है जो कि सभी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होता है। और इस पोइट्री में इन 3 स्टेंजाज में उसी साइकिल को, ग्रोथ, फुलफिलमेंट और डिक्लाइन की बात कही गई है। नाउ थीम्स की अगर हम इसमें बात करें तो साइकिल ऑफ लाइफ एंड टाइम, सबसे पहली थीम यही है कि ईच स्टेंजा मूव्स फ्रॉम ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। This is the theme of the poem. Nature's beauty and bounty. So celebration of seasonal harvest and rural life. So next is mortality and acceptance. तो एक दिन हम सभी को मर जाना है, हम सभी मॉर्टल हैं और इस चीज को एक्सेप्ट करना। सो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम एंड नॉट रेजिस्टिंग इट, इट इज ऑल्सो अ थीम ऑफ दिस पोएट्री which is an ode. Sensory experiences, तो sensory experiences में rich sight, touch, sound, ओके, स्मेल, ये सभी चीजों को इसमें काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। रोमांटिसिज्म तो है ही, नेचर की बात है, इमेजिनेशन है, डीप फीलिंग है, ये सभी चीजें रोमांटिक पोएट्री के फीचर्स हैं, कह लो। So in the first stanza, season of mist and mellow's fruitfulness. So this season, autumn season, is a season of mist and mellow fruitfulness. Okay, so autumn is described as gentle, fruitful and cooperative with maturing sun. तो ये जो ऑटम सीजन होता है ये बहुत ही जेंटल होता है, इसमें फ्रूटफुल होता है, मीन्स हर एक चीज प्रोडक्शन में होते हैं, मतलब प्लांट, ट्रीज, हर एक चीज कहीं ना कहीं अपने फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो और ये कोऑपरेटिव नेचर है, कह लो कि कोऑपरेट करता है हर चीज के साथ। और मैच्योरिंग सन के साथ, मीन्स सन के साथ ये कोऑपरेट करके हर एक चीज काफी प्रोडक्टिव होता है। लाइक यहाँ पे देखोगे ना, नेचर इज एट इट्स पीक प्रोडक्टिविटी। एप्पल बेंड्स द ब्रांचेस, गॉड्स स्वेल, हेजलनट्स रिपेंड। तो हर एक चीज अपनी प्रोडक्टिविटी के पीक पे होता है। हाँ, एप्पल्स जो है कि वो ब्रांचेस को बेंड कर रही होती हैं। हाँ, हेजलनट्स रिपेन हो रहा है और पक रहा होता है। तो एवरीथिंग इज आर एट्स इट्स पीक। Beers are overwhelmed with nectar, giving the illusions that summer is endless. तो ये चीज को वो बताता है, ये स्टेंजा में, इस स्टेंजा में ये चीजें हैं। अगर इमेजरी की बात करें तो इसमें विजुअल और टैक्टाइलिक इमेजरी आपको देखने को मिलता है। टैक्टाइलिक मतलब टच से रिलेटेड है। सो विजुअल इमेजरीज भी है, मिलो फ्रूटफुलनेस, रिपनेस टू द कोर। फिर सेंसरी डिटेल्स की बात, काफी क्रिएटिव वे में आपके सेंसेस को फील कराने वाली इमेजरीज जो है आपको इसमें देखने को मिलती हैं पोएट्री में। डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो पर्सोनिफिकेशन है, ऑटम और सन को एज अ फ्रेंड दिखाया गया है। इंजैबमेंट भी है, स्मूथ फ्लो ऑफ थॉट्स, कहीं भी आपको सेंटेंसेस ब्रेक नहीं हो रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, वो एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में चल रहा है। हाँ, काफी स्मूथ फ्लो के साथ। एलिट्रेशंस भी देखने को आपको मिल रहा है इसमें, मिस्ट एंड मिलो जैसे करके, फिल एंड फ्रूट। ओके, सो दिस आर द इन द फर्स्ट स्टेंजा ये चीजें आपको देखने को मिलती है। नाउ इन द सेकंड स्टेंजा, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफन एमिड्स द स्टोर, ये सब कुछ फेमस लाइंस है उसमें से। सो ऑटम इज पर्सोनिफाइड एज अ वुमन और अ रिपर सीन इन अ वेरियस हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया एक विमेन या एक रिपर से जो कि हार्वेस्ट करता है, और वो हार्वेस्टिंग के अलग अलग एक्टिविटीज करता हुआ दिखता है ऑटम सीजन। लाइक सेटिंग ऑन अ ग्रेनरी, ग्रेनरी के ऊपर बैठा हुआ दिख जाएगा आपको, स्लीपिंग द हाफ रिब फील्ड एंड वॉचिंग साइडर प्रेसिंग। तो ये चीजों में वो दिख जाएगा आपको ऑटम एज अ पर्सनिफाइड फॉर्म। So the stanza reflects leisure, stillness and fulfillment after labor. So first stanza में हम कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात देख रहे हैं, सेकंड स्टेंजा में फुलफिलमेंट की बात देख रहे हैं, ओके, स्टिलनेस की बात देख रहे हैं, लेजर की बात देख रहे हैं। हाँ, फिर थर्ड स्टेंजा में हम जब आएंगे तब उसकी बात करेंगे। नाउ द इमेजरी की हम बात करें तो स्टैटिक एंड स्लो मोशन इमेजेस, जैसे स्टिल, सिटिंग केयरलेस, साउंड स्लीप, ये सभी क्या है,
कैसे इमेजरी स्टैटिक और स्लो मोशन इमेजेस आपको देखने को मिल रहा है। यूज ऑफ पेस्टोरल विजुअल्स भी आपको देखने को मिल रही है, इसमें ग्रीनरी है, फ्रोज है, साइडर प्रेस है, ये सभी चीजें आपको वहां पे देखने को मिले। डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन है, ऑटम एज अ हार्वेस्टर और फीमेल फिगर के रूप में दिखाया जा रहा है। विजुअल इमेजरी डोमिनेट कर रहा है पूरे स्टेंजा में। एलिट्रेशन भी है, आपको देखो सॉफ्ट लिफ्ट। थर्ड स्टेंजा विच इज द लास्ट स्टेंजा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, है वेयर आर दे। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑटम का सॉन्ग नहीं होता है कोई, क्या स्प्रिंग सॉन्ग को वो ढूंढ रहा है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। हाँ, बट उसको लगता है द स्पीकर रेटोरिकली आस्क अबाउट स्प्रिंग्स म्यूजिक but quickly affirms that autumn has its own melodies. Means every season, every state of life has its own melodies. हाँ, तो हर एक लाइफ के सीजन्स को, उसके स्टेट के सबके अपने मेलोडीज हैं। उसी तरह ऑटम के अपने खुद के मेलोडीज हैं, जैसे वेलिंग एंड्स, ब्लीटिंग लैम्प्स, कुकिंग डोव्स, क्राइंग क्रिकेट एंड रिस्लिंग रेड ब्रेस्ट। ये सभी जो साउंड हैं वो किसके हैं? ऑटम सीजन में ये साउंड्स आते हैं, मतलब उसके सॉन्ग हैं ये। कोटेशंस देख लेते हैं। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट लाइन है, ओपनिंग लाइन है, आइकॉनिक ओपनिंग लाइन है कि ऑटम इज एज सॉफ्ट फुल एंड नरिशिंग, इट इज सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम एज अ कंटेंट पेपर। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? सो acknowledges spring's absence but shift focus to autumn। ठीक है, पहले तो वो स्प्रिंग के एब्सेंस को वो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करता है, बट उसका शिफ्ट फिर से वापस से ऑटम पे आ जाता है और कहता है कि ऑटम के अपने खुद के भी मेलोडीज हैं, उसके खुद के अपने सॉन्ग्स हैं। सॉफ्ट डाइंग डे, तो ये एक सिंबल है जेंटल एंडिंग का, ब्यूटी इन क्लोजर, एक्सेप्टेंस का, कि एंड विल कम। Thou watches the last aging hours by hours. So slow passage of time, richness of harvest, ये सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। नाउ अगर हम एमसीक्यूज की बात करें, सो लेट्स बिगिन एमसीक्यू। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस ओपनिंग लाइन? ओपनिंग लाइन का टोन कैसा है? तो ये कहने के एक सेलिब्रेटरी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ऑटम सीजन के, कि वो फुल ऑफ फ्रूटफुलनेस है, मींस इट इज द सीजन ऑफ प्रोडक्टिवनेस। ओके, नेक्स्ट है ऑटम इज पोर्ट्रेड एज द क्लोज ब्लॉसम फ्रेंड ऑफ whom? तो क्लोज ब्लॉसम फ्रेंड किसका है वो? तो इट इज द क्लोज ब्लॉसम फ्रेंड ऑफ समर। ओके, नेक्स्ट है इन द फर्स्ट स्टेंजा he praises autumn for its generosity and ripening power। तो autumn according to Keats is full of generosity and it has the power of ripening। ठीक है, हर एक चीज को प्रोड्यूस करना, उसको मेच्योरिटी तक ले आने का पावर है ऑटम सीजन में। द पोएम इमेजरी इन द स्टेंजा इज प्राइमरली, तो जो भी पोएम में इमेजरी यूज हुए हैं वो कैसे हैं? विजुअल इमेजरी ज्यादा है इसमें। बाय द वे और भी इमेजरीज है, बट अगर प्राइमरली या सबसे डोमिनेटिंग कोई इमेजरी है तो वो है विजुअल। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। तो जो कॉटेज के पास एक ट्री है एप्पल का, उसमें इतने ज्यादा एप्पल लेडन है कि वो बेंड कर रहे हैं उसके ब्रांचेस। सो इट इज द सिंबल ऑफ विजुअल इमेजरी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा? So this fruit is grapes and fill all fruits with ripeness at to the core is an example of। So ये example basically क्या है कि ये काम हो रहा है कि फ्रूट को रिपनेस से भर भर रहा है कोई, और ये कौन भर रहा है? ये तो ऑटम भर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें पर्सोनिफिकेशन जो है कि सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है इसका। व्हाट डज कीट्स emphasize through the image of budding more and still more later flowers? ये किसका एग्जाम्पल है? सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ richness and fullness of autumn until they think warm days will never cease refers to, it refers to bees. The bees in the first stanzas are described as, so they are described as drunken with nectar. In the second stanza Keats personifies autumn as patient harvester, जो कि काफी पेशेंस के साथ वो ग्रेनरी के ऊपर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। Thou watch the last oozing hour by hours refers to, so this refers to cider from pressed apples. Which of the following is not an image associated with autumn in the stanza second? So this is the dancing with the spring breeze. What does the soft lifted by the winnowing wind refers to? So it refers to the reapers here. What role does autumn play in the harvest according to the second stanza? An active participant in the ripening and the gathering.
The word careless in sitting careless on the granary floor implies peaceful idleness. On a half-reaped furrow, sound sleep suggests tranquil rest in the middle of the harvest. Steady thy leaden head across a brook personifies autumn as a reaper with heavy burden. What does the granary floor symbolizes the second stanza? Fulfillment and bounty. The tone of the second stanza can best be described as reflective and serene. The speaker in the third stanza asks autumn, where are the songs of spring? To suggest autumn has its own song. What songs are associated with autumn in third stanza? So, soft dying day, gnats wail, lambs bleating. Then in a willful choric, the small gnats mourn is a example of, so it is an example of personification. The light wind leaves or dies is an example of paradox, leaves or dies. Full grown lambs loud bleat from hilly bournes signifies nearing of winter. The atmosphere in the final stanza is calm and accepting. The word rosy hue refers to sunset. Soft dying day symbolizes nightfall and the end of the year. The mention of swallows in the closing lines represents change of seasons. The tone of the poem ends on a note of accepting mortality. Ode to Autumn is primarily a celebration of nature, bounty, and transition. The poem was written in which poetic form? So it is irregular ode with iambic pentameter. How many stanzas are there in Ode to Autumn? So there are three stanzas with 11 lines each. Which of the following literary devices is not major feature in the poem? Not hai. So this is hyperbole. You will find their personification, imagery, and alliteration. What does the progression of the stanza reflects? The cycle of a single day and human life. The poem was written in, so it was written in 1819. Keats wrote Ode to Autumn after walking near River Itch in Winchester. What theme does the poem strongly resist? Fear of death. Which poetic quality is dominant in this ode? Sensory richness and maturity. What classical feature does Keats' ode revive? Nature worship in pastoral tone. Which of the following best summarizes the poem? A calm celebration of nature's fulfillness and life cycle. The central contrast in the poem is between growth and death, not between spring or autumn. Keats associates the maturing sun with autumn's ripening effect. The overall movement of the poem is towards the final acceptance of nature's cycle and human mortality. Keats' attitude towards death in the poem is accepting and tranquil. The phrase "buried clouds bloom, the softly dying day" suggests natural beauty even at the day's end. Which romantic quality is strongest in the poem? Emphasis
on nature's power and harmony. Which sensory experience is not strongly present in the poem? Taste is not present there, or and others are present somewhere. The ode is often seen as Keats' most philosophical ode. Ode to Autumn marks a shift in Keats' poetry towards calm contemplation and acceptance. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।